Hello and welcome everyone. My name is Sunando Devnath. So we are discussing the chapter Pressure in Fluids and Atmospheric Pressure, a chapter from class 9th physics. We have done some lectures already. We have done some lectures in this chapter, and all of those lectures are arranged in proper sequence in the playlist named Pressure in Fluids and Atmospheric Pressure. So if you haven't watched the previous lectures for this chapter, first you watch those lectures and then you proceed with this one. Okay, so in the previous lectures we have discussed some important formula for pressure we have discussed, which is the perpendicular force upon area, which is actually thrust upon area, right? We have also discussed a formula for principle of hydraulic machine, which is F2 upon F1 is equal to A2 upon A1. It can be written in various ways. You can write F1 upon F2 is equal to A1 upon A2. That is the same thing. So based on these formulas, we will be discussing some very important numericals today. So I hope you are ready with your notebook and all, and you are ready for starting the questions. Write down the first numerical. A hammer. So start writing along with me and don't get distracted. Focus. A hammer exerts a force of 1.5 Newton on each of the two nails A and B. The area of cross section of tip of nail A is 2 millimeter square, while that of nail B is 6 millimeter square. Calculate pressure on each nail in Pascal. Now this is a very important question, very easy question also. So you see, there is a hammer that exerts a force of 1.5 Newton on each of two nails. So I have two nails. One is nail A, another is nail B. The area of cross section of the tip of nail A is 2 mm square, while the area of cross section of tip of nail B is 6 mm square. तो जो tip होता है nail का, वो दोनों का अलग अलग area है. So area of the tip of nail A is much less than that of the B. That means nail A, suppose this is nail A, it is a pointed nail because the area of the tip is 2 mm square. On the other hand, if I draw the other nail, the nail B, it is probably looking like this, which is blunt, you see, and comparatively it is having a more area of contact. So this is 6 mm square. So this is the area of the first nail and this is the area of cross section of the second nail. But on both of these nails, the same force is being applied, 1.5 Newton, and here also 1.5 Newton. मुझे निकालना क्या है? Calculate the pressure on each of the nail in Pascal. I have to find out how much of pressure is exerted on nail A and also on nail B. Obviously, the same force is there, but it is applied on different areas, so pressure would be different. Pressure is normal, the perpendicular force upon area. So area different होने पर pressure भी different हो जाएगा. हमें Pascal में निकालना है, so everything should be in SI unit because pressure का SI unit Pascal होता है. So force का भी जो हम SI unit लेंगे वो Newton तो है SI, but area का SI unit is not mm square but meter square. So we have to convert mm square into meter square first of all. Anyway, I am now erasing the figure. This was just for explanation. You need not draw the figure. So force exerted, the force exerted on each of the nails, let us call it F, is 1.5 Newton. Area
of cross section of tip of nail A. This is, let us call it A1, and this is 2 mm square. So this is basically 2. See, how do we convert it? This is mm square means 2 mm into mm, right? 2 into millimeters into millimeters. 2 millimeters are there, no? So millimeter square ho gaya. So when millimeter into millimeter gives you millimeter square. So basically you can just break it like this. This is 2 into 1 millimeter into 1 millimeter, isn't it? This is actually 2 millimeter square. मैंने just break किया solve करने के लिए. 2 into, अब हम 1 millimeter को हम meter में convert करेंगे. तो 1 meter is 10 to the power minus 3 meters. Similarly, again you have a 1 millimeter, it is 10 to the power minus 3 meters. तो यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर मुझे मिल गया. Finally, you can write 2 into 10 to the power minus 6. अब इन मीटर इंटू मीटर को मैं मीटर स्क्वायर लिख दिया. So, अब तुम डायरेक्टली कर सकते हो कि 2 mm square is 2 into 10 to the power minus 6 meter square. I hope you have understood how we have done it. Similarly, we will also find the area of the cross section of tip of nail B, which we are calling it A2. This is 6 mm square. Now directly we can write this is 6 into 10 to the power minus 6 meter square. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फोर्स, हमें प्रेशर निकालनी है, राइट? प्रेशर ऑन नेल A. तो F1, I mean F is the force, not F1 and F2. I have used F and A1. A1 is the area. F is 1.5 and A1 is 2 into 10 to the power minus 6. ये जो प्रेशर आएगा ये हमारा पास्कल में आएगा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 to the power minus 6 को मैं ऊपर भेज देता हूं. इट बिकम्स 10 to the power 6, राइट? तो साइन चेंज हो जाएगा. minus 6 becomes 6. मैंने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में सेंड कर दिया. तो अब इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजियर है. व्हेन यू विल सॉल्व दिस, it is very easy to solve it. You will have 7.5 into 10 to the power 5 Pascal. But similarly, you will have to solve for pressure on nail B. So pressure on nail B. This is again the same force F upon A2, right? 1.5 upon A2 का area 6 into 10 to the power minus 6. ये जो हमने निकाल के रखा हुआ है. Pascal. इसमें भी वही काम करूंगा. पहले मैं इस 10 to the power minus 6 को ऊपर सेंड किया तो it becomes 10 to the power 6. नीचे हमारे पास 6 है. अब इसको easily solve कर सकते हो. And on solving you will have 2.5 into 10 to the power 5 Pascal. So this is the area, this is the pressure on nail A and this is the pressure on nail B. Very simple question. Next question. Let us move to the next question. See, what is the next question, children? Write down this question. The pressure of water, this is again a very important question. The pressure of water on the ground floor is 40,000 Pascal, and on the first floor is 10,000 Pascal. Find the height of the first floor. Find the height of the first floor. हमें फर्स्ट फ्लोर की हाइट निकालनी है. कुछ डेटा दिया हुआ है. टेक डेंसिटी ऑफ वाटर is equal to 1000 kg per meter cube. Why this data is given, you will realize it when we will solve. G is 10 meter per second square.
So let us solve this question. So the pressure of water on ground floor is 40,000 Pascal and on the first floor is 10,000 Pascal. So see, this is a building, right? This is the ground. So the pressure on the ground floor, say at point A, which is on the ground floor, the pressure at point A is 40,000 Pascal. And say this is the first floor. Here, say this is point B, which is on the first floor. The pressure on the first floor is 10,000 Pascal. Okay, so basically there is some water kept at some height and the water is flowing through pipes, right, on first floor and then on ground floor also. So that tank is not shown, those pipelines have not been shown. Basically it is just told that the pressure on water on the ground floor is 40,000 Pascal and on the first floor is 10,000 Pascal. Obviously if there is some, water reservoir or a water tank kept on the top, so as we move down, as the depth increases, the pressure should increase. This is something that we have studied in the previous lecture. We have discussed that fluid pressure increases with depth from the free surface. So here we can consider that this is the place or the free surface. So as we are moving down, as the depth increases below the free surface, so the pressure should increase, and that is quite visible by the facts given over here, that as the depth has increased, so it is 40,000 and which is more than 10,000 Pascal. Now they have asked us what is the height of the first floor, means what is this height? What is this height? We have to calculate. So this height is basically the difference of the height from the ground and the first floor. This at ground floor the height is 0, and at point B, which is at the first floor, the height is h. So h is basically the difference of heights between the ground floor and the first floor. So I have to find out the difference of the heights. In fact, this is the actual thing, isn't it? The height of point A is 0 and the height of point B is h. So actually I have to find out what is the difference, that is h. तो ये जो height हम निकालेंगे, which is the difference of the heights of these 2 points from the ground, it will be calculated by the difference of the pressure between these 2 points. So what is the difference of pressures? So difference, ये हम निकाल रहे हैं, difference of pressures on ground floor and on first floor. So this is 40,000 minus 10,000 Pascal, which is 30,000 Pascal. ये हमने डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकाल लिया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है. दिस प्रेशर डिफरेंस विल गिव मी द हाइट डिफरेंस. हमें पता है प्रेशर इज एच रो जी. दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड. इसका डेरिवेशन भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम इज एच रो जी. Here the pressure that we will put in the formula is the pressure difference, which is 30,000 Pascal. H is also H we have to calculate. Now the density of water is given in SI unit. We will put it 1000 kg per meter cube into G, which is also given 10 meter per second, which is also in SI unit. We will simply solve it, and here 3 zeros gone, 1 0, and here the 1 0 is gone, so only 3 is left. H is just 3 meters. आ गया हमारा आंसर. This is the height of the first floor. Let us move to the next question. The area of, I hope you are solving the questions along with me, okay, and just not watching the videos. You should also solve along with me. Then only you will be benefited. The area of base of a cylindrical vessel
cylindrical vessel is 300 centimeter square. Be careful of the units. The unit is centimeter square. So the first question that we did today was also there, we had to convert the units from millimeter square to meter square. Maybe we need to do over here also. Let us see what is written further. Water, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेंसिटी इक्वल टू 1000 kg per meter cube is poured into it. Is poured into it up to a depth of 6 centimeters. ओके, यहां पे भी देखो जो हाइट दी हुई है वो सेंटीमीटर्स में है. अप टू depth of 6 centimeters. Calculate number, part A, the pressure, and part B, you have to calculate the thrust of water on the base. The thrust of water on the base. Bada easy question hai. Let us see what is written. The first thing that you have to do is read the question carefully and get the meaning of the question clear. The base of a cylindrical vessel has an area of 300 centimeters square. So you have a cylindrical vessel, something like this. The base of this vessel has an area. What is the area? 300 centimeters square. Very good. Now water is poured into it. इसमें हमने water डाला up to a depth of 6 centimeter. Means suppose I have filled water over here. So what is the depth of the water? Means from the free surface, what is the depth of the water? It is actually the height of the water. अगर हम base के respect में बात करेंगे तो base से height बोलेंगे because we are moving up. लेकिन free surface के respect में the depth of the water बोलेंगे. It is the same thing. So depth of the water is 6 centimeters. So both are given in centimeters. But since we have to give the answer of pressure in SI unit, it is not mentioned कि हमें SI unit में करना है, लेकिन ये हमेशा ये आदत बना लो. Make it a habit of giving your answer always in SI unit, even if not said. तो pressure का आंसर हमें pascal में देना है. So we need to keep all the units in SI. So we have to convert this height. This is the H, isn't it? We have to get it in meters. The area we will have to convert it into meter square. And then we will be able to calculate pressure. The density of water is already given, which is already in SI unit, which is 1000 kg per meter cube. Calculate the pressure on the base. Is base पर. Base means जो lowest point of this container. तो इस पर अगर हमें कितना pressure निकालना है, हमें height कौन सी consider करनी है? This 6 centimeter. We are basically calculating the pressure due to this water column. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी हमने डिस्कस भी किया है, H rho G. इसका डेरिवेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है. इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट लेक्चर, पहले उसको देखो जाकर. इस वीडियो में अपना टाइम वेस्ट मत करो. उसको पहले देखो, फिर एक सीक्वेंस में कंटिन्यू करो. सो H rho G, राइट. तो हमें इसका फॉर्मूला का यूज करना है. सो व्हाट आर द गिवन वैल्यूज? नाउ वी कैन से H इज गिवन 6 centimeter. We will immediately convert it into meters, which is, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 meters. एरिया, हमें एरिया का पता चल गया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेस इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको हम क्या करेंगे? दिस इज बेसिकली 300 इंटू, देर आर 2 टाइम्स सेंटीमीटर. नो, सेंटीमीटर स्क्वायर मीन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. सो एक बार एक सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, जैसा हमने यहां पे किया. 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो हमें 0.06 मीटर आ गया. लेकिन यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो एक बार और हमें 100 से डिवाइड करना है. सो दिस इज बेसिकली, ये कट गया. सो दिस इज बेसिकली 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब हमारे पास ये एरिया पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. फिर हमें पता है H, हमें रो पता है. रो मीन्स डेंसिटी, विच इज 1000 kg per meter cube. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन SI यूनिट, सो वी डोंट हैव टू बॉदर. हमें निकालना है प्रेशर.
अच्छा, एक और चीज जो हमें यहाँ g का वैल्यू हम यूज करने वाले हैं, वी विल बी यूजिंग g विच इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 10 न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी का मतलब ही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 न्यूटन पर केजी या 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले निकालना क्या है, प्रेशर ऑन द बेस, जिसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे H रो G। H का वैल्यू 0.06 मीटर, दिस वन। रो इज ऑलरेडी गिवन इन SI यूनिट 1000 kg per meter cube and G is 10 Newton per kg. So when you solve this is very simple multiplication. When you solve this, you will have 600 and unit is Pascal, because all the units we have used over here are in SI unit. So when we will solve the units, we will get it in Pascal. Second part is thrust of water. Thrust means the perpendicular force. तो हमने पढ़ा है ना, pressure is basically the thrust upon area. तो हमें ये thrust अब निकालना है. So we can say that F is P into A. बोल सकते हैं ना, A को इधर शिफ्ट कर दिया तो thrust is pressure into area. हमें यही thrust निकालना है. तो जब हम thrust निकालेंगे, this is the pressure into area, right? Pressure we have just now calculated in SI which is 600 Pascal. एरिया भी हमने SI में कर लिया है 3 into 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर. इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 18 एंड थ्रस्ट इज फोर्स, सो 18 न्यूटन. ठीक है, ये 10 to the power minus 2 एंड ये 10 to the power 2, ये दो जीरोज, दैट मीन्स 10 to the power 2 कैंसिल हो जाएंगे. 6 3 18, सिर्फ 18 बचेगा एंड दिस इज न्यूटन बिकॉज एवरी यूनिट इज इन SI, सो थ्रस्ट का भी यूनिट SI में आएगा, वो है न्यूटन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर एंजॉइंग. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So I have selected very important questions for today. Let us move to the next question. Okay, write down. A vessel contains water. A vessel contains water up to a height of 1.5 meters, taking the density of water 10 to the power 3 kg per meter cube. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity 9.8 meter per second square, and area of base of vessel and area of base of vessel 100 centimeter square. Calculate. What do we have to calculate? Part A, the pressure. This is very similar to the question that we did just now, and the thrust at the base of the vessel. That means we have to calculate the pressure at the base of the vessel and thrust at the base of the vessel. So you see, how do we solve this? In fact, I hope you people now can try this question. This is very similar to the one which we did just now. So a vessel contains water. There is a vessel, it may be a cylindrical vessel or a rectangular vessel or a square shaped vessel. It doesn't matter at all. Suppose मैंने यहाँ पे एक square or cuboidal shaped vessel ले लिया है जिसका cross section square है. ठीक है, तुम cylindrical भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So it contains water. इसके अंदर water है. And what is the height of the water? It is said it contains water up to a height of 1.5 meter. So हमें तो यहाँ पे यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, because the height is already given in SI unit, which is meters. The density of water is given 1000 kg per meter cube. G is given 9.8 meter per second square. वैसे previous question में G 10 दिया हुआ था, 10 meter per second square. यहाँ 9.8 बोला गया है, तो हमें यही लेना है.
area of the base of the vessel is given in centimeter square. So here we have to be very careful. Without conversion हम solve नहीं करेंगे. So we will convert this centimeter square into meter square first of all. एरिया भी दिया हुआ है बेस का, मीन्स ये जो बेस है इसका एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये सभी चीजें दी हुई है. सो लेट अस सॉल्व दिस. गिवन वैल्यूज आर, यू नीड नॉट ड्रॉ द डायग्राम, आई हैव जस्ट ड्रॉन इट टू एक्सप्लेन. सो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज 1.5 meters. The density of water, which is rho, is 1000 kg per meter cube. So 10 to the power 3 means 1000. G is given 9.8 meter per second square. And area of the vessel, base of the vessel is 100 centimeter square. Now when you divide it with 1 upon 100 and again a 1 upon 100 twice, if you will get in meter square. ये कट गया. So we are just left with 10 to the power minus 2 meter square. Simple. अब हमें क्या निकालना है? प्रेशर. प्रेशर एट द बेस, वही सेम फॉर्मूला H रो G, क्योंकि हमें फ्लूइड प्रेशर निकालना है. बहुत सिंपल है. प्रेशर एट द बेस ऑफ द वेसल, वही सेम फॉर्मूला, राइट? सो H रो G, 1.5 रो का वैल्यू 1000, जी का वैल्यू 9.8. थोड़ा मल्टीप्लीकेशन तो करना ही पड़ेगा. ओके, उतना तो करना ही पड़ेगा. और मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आंसर आएगा? 1.47 इंटू 10 टू द पावर 4. एंड दिस इज प्रेशर, राइट? सो पैस्कल में आएगा. वी हैव यूज्ड ऑल ऑफ द यूनिट्स. एच का भी यूनिट मीटर्स में मीन्स एसआई यूनिट, रो का भी केजी पर मीटर क्यूब एसआई यूनिट, जी इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट. सो प्रेशर का भी जो यूनिट होगा वो एसआई यूनिट ही होगा. वेरी सिंपल. पार्ट बी है, हमें निकालना है थ्रस्ट. वही सेम फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया, ये वाला. थ्रस्ट इज प्रेशर इनटू एरिया. थ्रस्ट इज प्रेशर इनटू एरिया. सो हमने प्रेशर तो निकाल लिया है. प्रेशर इज this 1.47 into 10 to the power 4. एरिया भी निकाल लिया है यहाँ पे 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर. तो दिस इज वेरी सिंपल, 147 न्यूटन. ओके, वेरी सिंपल. इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑब्वियसली 147 बहुत इजीली आ जाएगा. कितना सिंपल क्वेश्चन है, राइट? मजा आ रहा है ना? बहुत इजी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंट फॉर्मूला. अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किया है वो सभी इन दो फॉर्मूला पर बेस्ड था. एक बेसिक फॉर्मूला फॉर प्रेशर, वो था थ्रस्ट अपॉन एरिया, और हमने जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पढ़ा था उस पर बेस्ड था H रो G. इन पर बेस्ड फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस किया, राइट? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है प्रेशर का, और ये जो फॉर्मूला है प्रेशर का H रो G, जो सिर्फ फ्लूइड के लिए अप्लाई होता है. प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर H रो G. इन दोनों का यूज करके हमने क्वेश्चंस किया, और आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में भी आया. अभी हम हाइड्रोलिक मशीन का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, वी विल बी यूजिंग दैट फॉर्मूला एंड डूइंग द क्वेश्चंस. राइट डाउन दिस क्वेश्चन. इन अ हाइड्रोलिक मशीन, in a hydraulic machine, a force of 2 Newton is applied on the piston of area, of cross section 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. खतरे की घंटी बज गई. सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया दिया हुआ है. बी वेरी केयरफुल. What force is obtained on its piston of area of cross section 100 centimeter square. So over here, how do we solve this question, children?
इन अ हाइड्रोलिक मशीन, तो पहले हमें क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि हाइड्रोलिक मशीन की बात की जा रही है। दैट मीन्स हमें अप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। किसका यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन का हम यहां पे यूज करेंगे। तो पहले तो वो याद करो कि प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन का जो फॉर्मूला है वो है F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, याद रखना। अब इन सिंबल्स का मीनिंग क्या है? F2 इज द फोर्स विच वी गेट ऑन द लार्जर पिस्टन, बड़ा वाला पिस्टन, है ना। हमने अगर प्रीवियस वाले लेक्चर जिसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन को एक्सप्लेन किया था पूरे डायग्राम के साथ, पूरे अच्छे से डेरिवेशन को एक्सप्लेन किया था, ईच एंड एवरीथिंग, उसको अगर देखे नहीं हो तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि क्या है नैरो पिस्टन, क्या है बिग पिस्टन सर। लेकिन अगर देखे हो तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि F2 इज द फोर्स ऑन दैट वी गेट ऑन द वाइडर पिस्टन, ऑन द लार्जर पिस्टन। F1 इज द फोर्स ऑन द नैरोअर पिस्टन, नैरो पिस्टन, और ये वाला वाइड पिस्टन, ठीक है। A2 जो है वो है एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन, या फिर वाइडर पिस्टन बोल सकते हो, लार्जर पिस्टन, एंड A1 इज द एरिया ऑफ द नैरो पिस्टन। तो हमारे पास दो पिस्टन होता है हाइड्रोलिक मशीन में, एक छोटा पिस्टन, एक बड़ा पिस्टन। तो बड़ा पिस्टन का एरिया A2, छोटा पिस्टन का एरिया A1। बड़ा पिस्टन में जो फोर्स लगा F2, छोटा पिस्टन में जो फोर्स लगा F1, इतना ही सिंपल है। तो नाउ यू सी व्हाट आर द डेटा विच आर गिवन। फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पिस्टन है, उसकी एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक हमें पढ़कर यह पता नहीं चल रहा है कि दिस इज द नैरो पिस्टन और द वाइडर पिस्टन, स्मॉल पिस्टन और द बिग पिस्टन, हमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि सिर्फ एरिया दिया हुआ है, ये पिस्टन का एरिया दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं, व्हाट फोर्स इज ऑब्टेन ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें क्लियर हो जाता है कि अब इससे भी बड़ा एक पिस्टन है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दैट मीन्स द पिस्टन विथ एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द लार्जर पिस्टन। ये हमें क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हुआ। और ये जो 10 सेंटीमीटर वाला पिस्टन है ये स्मॉलर पिस्टन है, और उस स्मॉलर पिस्टन पे ही 2 न्यूटन का फोर्स लगा है। क्या मजे की बात है। अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन हुज एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस 2 न्यूटन को तुम F1 बोलोगे या F2 बोलोगे? बड़े आराम से बोल दोगे F1 होगा सर, क्योंकि F1 इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। सो फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉलर पिस्टन, जिसको हम F1 बुलाते हैं, विच इज 2 न्यूटन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। गलती से भी इसको F2 मत ले लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन को हमें पढ़ के पता चल गया है कि F2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला पिस्टन विच इज अ स्मॉलर पिस्टन, क्योंकि इससे भी बड़ा एक पिस्टन है। और हमें निकालना है व्हाट फोर्स इज ऑब्टेन्ड ऑन दिस लार्जर पिस्टन, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला पिस्टन। तो हमें फोर्स अप्लाइड ऑन लार्जर पिस्टन वो हमें निकालना है। वी डोंट नो, F2 इज टू बी कैलकुलेटेड, सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन, ये तो हमें पता है, विच इज A1। A1 से हम स्मॉलर पिस्टन को बोलते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन, आई मीन लार्जर पिस्टन इज A2 विच इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यहां पर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर है यूनिट्स, इसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है अभी तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि यहां पर ये रेशियो हम यूज करेंगे इनका, और रेशियो में तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर सेम ही आएगा। तो जब हम रेशियो करेंगे तो हमें यूनिट्स को SI में ही करना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों यूनिट्स सेम होना चाहिए। अभी देखो तुम्हें समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया है अभी तक कि हमें क्यों जरूरत नहीं है SI में कन्वर्ट करने की इस क्वेश्चन में, तुम्हें अभी समझ में आएगा। तो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन यूजिंग, इस स्टेटमेंट को जरूर लिखना, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, एंड इसमें हमारा क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। दिस इज द प्रिंसिपल। F2 के प्लेस पर हम लिखेंगे
F2 ये हमें पता नहीं है, निकालना है। F1 is 2 न्यूटन। A2 we will write 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड A1 is 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। तुम अगर इसको कन्वर्ट करके भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी लिखोगे तो भी जिस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके तुम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे वो भी तो कट जाएगा, मीटर भी कट जाएगा, मीटर स्क्वायर कट जाएगा। अल्टीमेटली हमारा जो रेशियो है वो अनचेंज रहेगा, वो रेशियो हमारा चेंज होने वाला है नहीं। तो जब हमारा रेशियो है और वो कट जाएगा, सो वी डोंट हैव टू नेसेसरीली कन्वर्ट इट टू एसआई यूनिट। ये तो कट गया एंड ये भी कट गया, तो वी हैव F2 which is just 20, 2 is multiplied with this 10 cross multiply, so 20 न्यूटन। तो हमारा ये आ गया, therefore force obtained on larger piston which is of area 100 centimeter square is equal to 20 न्यूटन। कितना सिंपल से हमने सॉल्व कर लिया है ना, interesting। Let us do another question which is also based on this hydraulic machine principle. Write down the areas of pistons, the areas of pistons in a hydraulic machine, are 5 centimeter square and 625 centimeter square. What force on the smaller piston, will support a load of 1250 Newton on the larger piston? State any assumption which you have made in your calculation. State any assumption that you have made in your calculation. Okay, so basically जो assumption हम कर रहे हैं इस hydraulic machine में, इन सारे questions में, even in the previous question, what have we assumed? That there is no leakage of liquid. Hydraulic machine में एक liquid होता है। ये जो hydraulic machine है, जब मैंने explain किया था hydraulic machine, I have discussed that there is a liquid inside the hydraulic machine which is a confined liquid, closed from everywhere. तो वो liquid का कहीं leakage नहीं हो रहा है, हम ये assume करेंगे। यही सारे assumption है, और ये हम assume करेंगे that there is no friction inside the fluid। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, आइडियल केस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल केस में तो फ्रिक्शन जरूर होता है। बट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो एनर्जी वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन इनसाइड द मशीन एनीवेयर। तो ये सारे अजम्पशन हम कर रहे हैं और सॉल्व भी उसी तरह कर रहे हैं। ओके, लेट अस नाउ प्रोसीड विद द क्वेश्चन। द एरियाज ऑफ द pistons are 5 centimeter square and 625 centimeter square. Obviously ये छोटा वाला piston का एरिया है because 5 is smaller than 625. तो A1 which is the area of the smaller piston is 5 centimeter square. A2 refers to the area of the bigger piston which is 625 centimeter square. We don't have to again change the units to meter square because ultimately we will be cancelling because A1 upon A2 या फिर A2 upon A1 ऐसे ही हम लिखेंगे, तो रेशियो ही करना है ना एरियाज का, तो कट जाएगा, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। व्हाट फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन, हमें स्मॉलर पिस्टन का फोर्स निकालना है, मींस दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, F1 इज अ क्वेश्चन मार्क। विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 1250 न्यूटन ऑन द लार्जर पिस्टन, तो ये लार्जर पिस्टन का फोर्स बताया गया है F2। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे।
F2 अपॉन F1, या फिर मैं इस बार रेसिप्रोकेट करके लिखता हूं क्योंकि मुझे F1 निकालना है, तो लेट मी कीप F1 इन द न्यूमरेटर. F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2. दिस इज द सेम फॉर्मूला, है ना. या तो तुम लिखो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था. इस बार मैंने F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 लिख दिया. जस्ट दोनों साइड मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया. आई हैव केप्ट F1 डेलिबरेटली ऑन द न्यूमरेटर बिकॉज वी आर फाइंडिंग द F1. उल्टा करके भी लिखोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा. तो F1 इज अननोन, F2 इज 1250, A1 is 5 and A2 is 625. सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर काट सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कट जाएगा. एंड व्हेन यू सॉल्व दिस, F1 is basically 5 into 1250 upon 625 and upon solving this you will have 10 Newton. तो हमारा ये F1 which is the force on the smaller piston, it will come 10 Newton. Okay, because 625 2s are 1250 and 5 2s are 10. Okay, very simple. And assumption हमने लिख लो इसको. Assumption हमने किया, there is no friction, there is no friction and no leakage of fluid, and no leakage of fluid. यही हमने assumption किया. तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करते हैं. इफ यू हैव लाइक्ड इट एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, इफ यू वांट टू कीप मी मोटिवेटेड, योर like matters a lot. Press the like button and keep me motivated and inspired, children. And we will be committing in the next video, next lecture. If you don't want to miss it, then press the bell icon and turn on all notifications. Thank you all of you. God bless you. Take care.